Hello everyone, I am Prabjit Kaur and today's topic is finding the missing number. How to find the missing number? See, to find the missing minuend, okay, if we have to find the missing minuend, then what we do? Minuend means the greater number, okay, from which the smaller number is to be subtracted. How we find the greater number? For finding the greater number, what we do? We add the difference and the subtrahend. Okay, how we find the missing minuend? We add the difference and the subtrahend. I explain you with an example. Suppose we are having a number 5286. This is our subtrahend. Okay, and 4694. This is our difference. And we have to find the minuend. Okay, हमें minuend find out करना है. Subtrahend is given to us and difference is given to us, and how we will find? What we have to do? We have to add the subtrahend and the difference. हमें क्या करना है? Difference और subtrahend को add कर देना है. So let's start. 4694. This is the difference, and 5286. This is the subtrahend, and we have to add the difference and subtrahend to find the minuend. 6 plus 4 is 10, 1 carry. 9 plus 1 is 10, 10 plus 8 is 18. 6 plus 1 is 7, 7 plus 2 is 9, and 5 plus 4 is 9. So our minuend is 9980. Okay, हमारा जो minuend है वो क्या आ गया है? 9980. And if we have to find the missing subtrahend, then what we do? See, to find the missing subtrahend, what we do? We subtract the difference from the minuend. हम क्या करते हैं? minuend में से difference को subtract कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? subtrahend. I explain you with an example. See this example. Minuend is given to you 9625. Difference is also given to you 3289, and you have to find the subtrahend. Then how you will find? What you have to do? You have to subtract the difference from the minuend. आप क्या करेंगे? minuend में से difference को subtract कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? subtrahend आ जाएगा. See, minuend is 9625, difference is 3289. Now subtract minuend and difference. 15 minus 9 is 6. This will become 1. 1 will borrow and it will become 11. 11 minus 8 is 3. 5 minus 2 is 3. And 9 minus 3 is 6. So this is our subtrahend. Okay, so this way you will find the subtrahend. What you have to do? For finding the subtrahend, you have to subtract the difference from the minuend. जब भी आपको subtrahend find out करना है, आपको minuend में से difference को subtract कर देना है. Okay? Let's take one more example. Question is this: if this kind of question comes to you, then how to solve? See, this is our minuend. This is subtrahend. And this is the difference. Okay, now here we have to find the greater digit. That means here we have to find the minuend. So how we will find? We will add 7 and 5. हम क्या करेंगे? 7 और 5 को add कर देंगे, और 7 और 5 को जब हम add करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12. But we cannot write 12 here, so we will write 2 here. ओके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे. और अब 2 माइनस 7 तो 5 नहीं होता. दैट मीन्स ये 12 माइनस 7 5 हुआ था, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया? 3. ओके, 12 माइनस 7 इज़ 5. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस ब्लैंक प्लेस. So if we have to find the subtrahend, then what we do? We subtract the difference from the minuend. So 3 minus 2 is 1. Okay, हम क्या करेंगे? minuend में से difference को subtract कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 1.
अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मिन्यूएंट. 8 + 4 इज़ 12. 8 + 4 12 होता है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6. बिकॉज 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो ये 2 क्या बना था, 12 कैसे बना था, इसने बोरो किया था इससे. तो ये हो गया 12 और ये बन गया 6. अब हमें सब्ट्रैहेंड निकालना है, और सब्ट्रैहेंड के लिए हम क्या करते हैं, मिन्यूएंड में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ओके, सो this way you will find the missing digits.